A big warm hello to all of you. I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon. I spent most of my life teaching students the fun game of numbers. Today, I have prepared a lesson on number systems for class 9th CBSE. Let's start. Since childhood, you have been dealing with the questions how many siblings are you, or how many days are there in a month, etc. All these questions are answered by using numbers, and these counting numbers are known as natural numbers. And natural numbers are denoted by n. So n equal to 1, 2, 3, 4 and so on. And 1 is the smallest natural number. If we going on adding 1 to each natural number, we get the next natural number. We can't write the greatest natural number क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है, तो नेचुरल नंबर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम बता ही नहीं सकते. Now, if we add two natural numbers, we get another natural number. So we can say that natural numbers are closed for addition. Next, now suppose Sudhir has 5 mangoes. He gives 3 to his sister and 2 to his brother. So how many mangoes left with him? 0. But 0 is not a natural number. Thus, 0 along with natural numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on are called whole numbers. And the collection of whole numbers is denoted by W. So W is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Now, if we subtract a natural number from another natural number, the answer is not always a natural number. कैसे? Suppose 5 minus 3, so we get 2 and 2 is natural number. But if we subtract 3 minus 5, then we get minus 2 and minus 2 is not a natural number. Thus, we need arise to extend collection of whole numbers by including negative numbers, and this collection is called system of integers, and integers is denoted by z or I. So integers z or I equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and so on. So these are integers. If we multiply two natural numbers, we again get a natural number. Suppose 2 into 4 equal to 12. So 12 is a natural number. So we can say that natural numbers are also closed under multiplication. But when we divide a natural number by another natural number, we may or may not get a natural number. Suppose we divide 6 by 3. So we get 2 and 2 is a natural number. But when we divide 6 by 4, we get 3 by 2 and 3 by 2 is not a natural number. This is not a natural number. So natural number is not closed under division. So here we write natural
natural numbers are not closed under division. To overcome this, we have to extend the system further and we find rational numbers. The numbers of the system are obtained by dividing two integers and the resulting number is called rational numbers. Division by 0 is not defined. Thus, all the numbers of the form a by b, where a and b are integers and b not equal to 0 are called rational numbers. If a and b have no common factor then other than 1, the number is said to be a lowest term. लोएस्ट टर्म कैसे हो जाएगा? सपोज 3/5, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो ये लोएस्ट फॉर्म हो गई. 9/7, 2/3, ये सारे के सारे लोएस्ट टर्म कहलाती हैं क्योंकि इनका सबका फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1. The rational numbers, 4 basic operations of addition, subtraction, multiplication and division, b not equal to 0, division में denominator 0 नहीं हो सकता, can be performed. A rational number may be negative, positive, negative or 0. However, if we take only non-zero positive rational numbers, we get fractions. So we write fraction as f equal to a by b, where a and b are natural numbers. ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए. आगे ये आपको हर क्लास में काम आएंगे. सो अभी ये आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. First one, every natural number is a whole number. This is true because whole numbers contains all natural numbers and 0. So it is true. This first statement is true. Second one, every integer is a whole number. This statement is false. Negative integers like -2, -5, etc. are not whole numbers. Third one, every whole number is a natural number. This is also false because 0 is a whole number, but not a natural number. Next one, fourth one, every rational number is an integer. This is also false. Rational numbers of the form 1/3, 3/4,
एक्सेट्रा आर नॉट इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं ही नहीं. नेक्स्ट वन, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर. दिस इज ट्रू. अगर मान लीजिए होल नंबर, कोई भी होल नंबर है m, तो हम उसको m/1 लिख सकते हैं. सपोज होल नंबर इज़ 4, सो वी राइट 4/1. Whole number is 7, we can write 7/1. So suppose whole number is m, so we write m/1, etc. And m/1 is rational number. So this is true. Every rational number is whole number. ये फिफ्थ वाले का रिवर्स है. So this is false. Because rational numbers like 1/3, -3/7, etc. are not whole numbers. Next one, 0 is a rational number? Yes, this is true. Because we can write 0 as 0/1, 0/2 or 0/7, etc. And this is in p by q form, so 0 is rational number. Example number 2. Represent each of the following on the number line. For number line, consider a line L. So this is our line L. Let us fix a point O. This is O and it is called origin. Now we mark 1, 2, 3 at 1, 2, 3, 4 at equal distances to the right of O, and -1, -2, -3 and so on to the left of O. This 1, 2, 3, 4. Here it is -1, -2, -3, -4. ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस पर होने चाहिए. कितने भी हो सकते हैं. 1 को हम यहाँ पे भी 1 ले सकते हैं, मतलब डिस्टेंस, लेकिन 1 और 2 के बीच में, 0, 1 के बीच में, 3, 4 के बीच में, ये डिस्टेंसेस सारे इक्वल होने चाहिए. नाउ फर्स्ट इज 1/2. हमको जो शो करना है फर्स्ट वाला 1/2. एज 1/2 लाइज बिटवीन 0 and 1, we divide the distance between 0 and 1 into 2 equal parts. So इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया. हाफ इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए. सो जो ये वाला पॉइंट है ए, ये क्या शो करेगा? हाफ. सो पॉइंट ए दिस शोज एज हाफ. तो हम इसको कैसे शो करेंगे? इसको पॉइंट बना देते हैं एक. यहाँ पर ये एक पॉइंट है ए और ये हमारा हाफ 1/2 को शो करेगा. तो इस तरह से हम हाफ इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. सेकेंड वन, -2/3. सो to represent -2/3, 2/3 is a negative rational number, and which will be represented by the point on the left side of O, of the origin line. So suppose this is our line L and O is origin, and here 1, 2, 3, -1, -2, -3. नाउ हमें -2/3 रिप्रेजेंट करना है.
So -2/3 lies between -1 and 0. तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0 और -1 और 0 के बीच को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, और जो पॉइंट बी आएगा हमारे पास, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ इक्वल टू -2/3। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। सपोज़ जैसे नंबर लाइन में नंबर जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, और अगर मान लीजिए हमने यहाँ ओ ओरिजिन किया, तो हम यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इतना भी ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर ये 1 2, मगर ये डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से इनके डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, और जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, सपोज़ मान लीजिए हमको 4/5 बताना है, तो 4/5 क्या होगा, कहाँ होगा, 0 to 1 के बीच में। तो इट मीन्स नीचे 5 आ रहा है इस वाले केस में, तो 0 और 1 को 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जो ये पार्ट आएगा, पॉइंट आएगा P, एंड दिस इज़ 4/5। तो इस तरह से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 3, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। अब इनके बीच में 4 and 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट 4, we can write 4 equal to 4 into 4/4 equal to 16/4, and 5 equal to 5 into 4/4 equal to 20/4। अब हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, बिकॉज हियर वी मल्टीप्लाइंग and dividing by 4 मीन्स 3 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो 3 + 1 इक्वल टू 4। तो जितने भी रैशनल नंबर्स चाहिए उससे एक ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। नाउ वी हैव 16/4 and 20/4। Hence 17/4, 18/4, 19/4 are 3 rational numbers between 4 and 5. Now example number 4. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. यहाँ पर हमको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो 3/5 इक्वल टू 3 into 5, किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो 5 + 1 इक्वल टू 6। सो वी हैव 3/5 into 6/6 इक्वल टू 18/30, and 4/5 equal to 4/5 into 6/6 equal to 24/30. Here we multiplying and dividing by 6. That is 5 + 1, क्योंकि 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। So therefore 5 rational numbers between 18/30 and 24/30 are
19 upon 20, 20 upon 20, 21 upon 20, 22 upon 20 and 23 upon 20. Therefore, 19 upon 20, 20 upon 20, 21 upon 20, 22 upon 20 and 23 upon 20 are 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5. In examples 3 and 4, we have found 3 and 5 rational numbers between two given numbers. But there lies an infinite number of rational numbers between two distinct rational numbers a and b. Let's find 8 rational numbers between 2 by 7 and 3 by 5. So writing 2 by 7 and 3 by 5 in the form of numbers having common denominator, we multiply 2 by 7 multiplying and dividing by 5. So we get 10 by 35 and 3 by 5 we multiply 7 and divide by 7. So we get 21 upon 35. 21 upon 35. Now in both rational numbers we have common denominator b. Therefore, we now find rational numbers between 10 upon 35 and 21 upon 35. Clearly, these are 11 upon 35, 12 upon 35, 13 upon 35, 14 upon 35, 15 upon 35 and so on. Thus, 11 upon 35, 12 upon 35, 13 upon 35, 14 upon 35, 15 upon 35, 16 upon 35, 17 upon 35 and 18 upon 35 are 8 rational numbers between 2 by 7 and 3 by 5. तो हमें 8 चाहिए थे, हमने 8 लिख लिए, लेकिन ये बहुत सारे हैं, आगे और भी निकल सकते हैं 22 और 20 upon 35 तक. Thanks everyone. Hope you enjoyed the lesson today. I will be uploading part 2 of number system soon. Please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos.